अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरे यूट्यूब करियर का एक बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट क्रिएटर्स इन पाकिस्तान सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी हैज़ इनवाइटेड मी टू हिज पॉडकास्ट थॉट बिहाइंड थिंग्स। थॉट बिहाइंड थिंग्स मेरा फेवरेट पॉडकास्ट है पाकिस्तान में। मुज़म्मिल भाई को मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, प्रॉब्ली फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर। 2008 में जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी तो मैं भी बहुत फेसबुक में एक्टिव था उस वक्त, और आई थिंक उसी वक्त भी उसी टाइम पे मुज़म्मिल भाई ने भी शुरू की थी अपना वीडियो फोटोग्राफी वगैरह। तो आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव उस वक्त भी ऑन सोशल मीडिया। तो आई पिक्ड अप हिज कंटेंट उसी तरह से और मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। और एक तरह से मैं इस तरह के फॉलोअर, इस तरह के जो कंटेंट क्रिएटर्स थे उनको मैं बड़ा एविडली फॉलो करता था, क्योंकि जो मेरा पाकिस्तान के साथ मिसिंग कनेक्शन था, स्पेशली इस्लामाबाद। तो जो इस्लामाबाद के कंटेंट क्रिएटर्स थे उनमें सबसे टॉप क्रिएटर मुज़म्मिल भाई आते हैं। तो उनके लेंस के थ्रू मैं अपना जो ये आइडेंटिटी क्राइसिस था वो फिल करता था एक तरह से, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मेरी एज के लोग हैं वो पाकिस्तान में क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, मतलब उनकी क्या व्हाट आर द डिसलाइक्स और लाइक्स, उनको क्या यहाँ पे लाइफस्टाइल होता है पाकिस्तान में। तो वो जो था वो मैंने मुज़म्मिल भाई को फॉलो करके वहाँ से सीखा। तो कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उनसे मिलने का मौका मिलेगा, वो मुझे इनवाइट करेंगे अपनी पॉडकास्ट में। तो इट्स अ वेरी बिग डे फॉर मी इन दैट वे। ऑल्सो मुज़म्मिल भाई को अगर आप नहीं जानते तो ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अथॉरिटीज़ ऑन डिजिटल मीडिया इन पाकिस्तान। मुज़म्मिल भाई इज़ ऑल्सो दी ओनली बिग क्रिएटर इन पाकिस्तान सो फार जिन्होंने मेरे काम को अभी तक रिकगनाइज़ किया है। तो ये मेरे लिए बहुत छोटा क्रिएटर जो होता है जब एक बड़ा क्रिएटर उसको इस तरह रिकगनाइज़ करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक हौसला अफजाई होती है उसकी। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिम फॉर हिज जेनरोसिटी, और उन्होंने मेरे काम को रिकगनाइज़ किया इस तरह। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। तो अब चलते हैं, मैं जा रहा हूँ पॉडकास्ट में। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे आप लोग इस पॉडकास्ट के फ़ैन्स भी हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाया जाए व्हाट गोज़ बिहाइंड द थॉट बिहाइंड थिंग्स। तो आपको मैं थोड़े सोचा था बिहाइंड द सीन्स दिखाऊं ऑफ दिस रिकॉर्डिंग, लाइक ऑफ द पॉडकास्ट, कि क्या व्हाट गोज़ इनटू इट, द टीम बिहाइंड इट, और जस्ट शो यू द बिहाइंड द सीन्स ऑफ द होल डे ऑफ दिस बिग डे ऑफ माई लाइफ। तो लेट्स गो। You're here for the podcast? Nice. Please be seated. Thank you. Assalamu alaikum. कल तो नहीं है ना कोई पॉडकास्ट, कल मुज़म्मिल भाई का और हमारा है ना पाकिस्तान क्रिकेट का। ओके, तो हमें बैक लाइट चाहिए होगी। हाँ श्योर, ठीक है, थैंक यू। हाँ श्योर। एक कैमरा इधर ही लगता है हमारा, इसको कवर करने के लिए, एक वहाँ लगता है इनको कवर करने के लिए। तो मैक्सिमम ये एरिया इस कैमरा से कवर होगा। तो यू कैन या मैं पहले कर लूँ सेटअप, फिर उसके बाद आप कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। कि एग्जैक्ट किस जगह पे आएगा। थैंक यू। अच्छा, उस माइक में मुझे ज़रा सा कुछ बोल के बताएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Guys, my sincere apology. This is not me. I don't do this. Assalamualaikum. So I am super sorry. मैं आज actually गाड़ी बेचने निकला और फिर मुझे पता लगा कि पाकिस्तान के निज़ाम आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है। Gonna talk about that as well today. Sir, how are you? अल्लाह का शुक्र। It's an absolute pleasure meeting you, putting a face to Likewise. the personality. Likewise. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत नहीं हुआ। दिखी। देखिए ठीक है, अल्लाह का देखिए शुक्र। पैसे आ गए बैंक में, तो that's good. मैं थोड़ा बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो यू कैन से हाय टू ईदर ऑफ द Oh, कैमरास। sir, there's that as well. Hello. मैंने कहा बिहाइंड द सीन्स ऑफ थॉट बिहाइंड द What camera is this? ये है जी M6 Mark II। How is that treating you? It's good. It's 4K Right. up to 30 FPS. छोटा है, nimble है, I like। Yes, mirrorless, right? जी, मेरा ये बता।
I'm a Canon fanboy. Yeah, same. So इसकी जो पहली सीरीज थी सबसे पहले जो M50 आया था. M50 is really good, value for money. अच्छा, I didn't like it for some reason. But granted, I had an EOS R. जी. So I was comparing it to that consistently, and I didn't like the colors at all. अच्छा. Although I've heard this is better than M50. ये इसकी resolution बहुत अच्छी है. अच्छा. इसकी मसला इसके साथ वो lenses का ही है. पूरी M series का lenses का मसला. हाँ. अभी आपने कौन सा लगाया वैसे? इस पे वही 1122 f4. Oh, वो तो मुझे मजे का होगा. हाँ, अच्छा खासा wide range है. You're also married? You recently had a kid? Yes. How's that going? 2 months ago. Just gonna tell you, it's not gonna get any easier. आपने कहा था 3 महीने वाला जो था वो in one of your podcasts. यार उसके नहीं, बाद एक 3 months I'm like Right there. होंगे then things are gonna get easy. The 3 months final के बाद it gets easy. I'm just kidding. People said that to me and I was like, I lost all hope. 7 months के बाद ना, you begin to fall asleep for 8 hours. अच्छा. वो जो ना कि नींद आपको समझ ही नहीं आ रही कि यार नींद किधर होती है. वो बाकी सब चीजें सेम, बल्कि in fact they get more hyper and more वो तो the energy, they take more energy, but they start sleeping longer during the night. Generally podcast 3 steps पे. First step is early life, second step is experience, and third is philosophy. Early life में हम आपका explore करेंगे growing up, what was life like for you, and then leading up to why did you choose a comms degree, what was the thought behind that, and then eventually moving back to Pakistan and deciding, yeah, listen, I want to do YouTube for most part. And I'm sure you're 28 years old right now. When did you graduate from your university? 2016. 2016. That was 23 age. roughly 24 हो गया था. 23. उसके बाद आपने क्या किया, जॉब शॉप की, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे. एंड देन मूविंग बैक टू पाकिस्तान, एंड देन डिसाइडिंग क्या कंटेंट करना है, थॉट क्या थी, चैलेंजेस क्या थे, अपॉर्चुनिटीज क्या थे, और फिर जब ये सारा हो जाएगा तो इसमें से हम फिलोसफी निकालेंगे कि बेस्ड ऑन योर थॉट लीडरशिप एंड योर एक्सपीरियंसेस, व्हाट your insight on, let's say, the digital industry, or your insight on help content or DIY content. That's a niche that you're sort of trying to carve out in Pakistan as well. I haven't seen that being explored before. यार एक गोल्डन रंग का यहाँ पर था, वो तो हाँ किसका सॉरी ये जाना ये देखिएगा जरा दूसरे रोड पे लगा हुआ. Just for my info, like आपने मेरा क्या क्या देखा हुआ है content? मैंने आपका mostly help content. I loved the solar panel video. I loved the मुर्गी वाली video. I loved the मुर्गी वाली. I mean the video. I think there were a bunch of those. I'm not sure. I loved there was the gate situation happening there. So there's a lot of, in my understanding, and I'm not sure that that's what you're doing, or is that like sort of separate content. There's a lot of help lifestyle content. इस broadcaster में क्या issue है? इशू नहीं है वो The speaker isn't working on, and this particular hello, बोलिए कुछ प्लीज. हेलो अस्सलाम वालेकुम. इसका गोल्डन रंग का ढूंढना था. These ones are cheap. जैसे खराब हो No, जाते हैं। golden वाले. हाँ, वो golden अच्छा वाले चाहिए because ये खराब खराब है. हो जाते हैं। I need to record a video while you're having your podcast. So use the दूसरा other वाला? one. हाँ. ठीक है. Also, listen, Sarmat, can you just run those guys through for tomorrow? That's if you would do it right now. Okay, great. Thank you. फिर भाई थोड़ा सा इनको करीब करिएगा. माइक तो सर टेढ़ा है, उसको थोड़ा सीधा कर दीजिएगा. थोड़ा सा बस ठीक है, आगे सही है. माइक को थोड़ा सा ऊपर करें. चलो क्या फ्लिप स्क्रीन कर दीजिएगा, इसको ऑन कर दीजिएगा. नहीं ऑन यार.
यार असल में मसला पता है क्या है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी वेरी क्रेजी हाउ देयर आर सो मेनी commonalities that I can find between us. Okay, I had the pleasure of going to US for twice for 6 months and then 2 months. भाई वगैरह मेरे वहाँ होते थे and I took a year, so I took a gap year and was very very depressed in 2010 and then I went to the US, saw it very very closely in a very sort of non-touristy fashion and was one of the major reasons why 6 बहन भाई में से 5 बाहर और मैं था कि नहीं मैंने पाकिस्तान में ही रहना है. दूसरा literally seeing rich people up close and realizing कि भाई अगर अमीरों की ये हालत है तो I don't want to be freaking rich, you know. And third, I think the idea that that enlightenment of not pursuing the money or saying that money is as being a byproduct and money will come in irrespective is a very fascinating thing. I don't see a lot of people having that, so that was really great to hear. Thank you. Neev, it's very interesting because we started this thing called Already Grown Up around a year and a half ago, and that was very so. आप लोग आपकी जब मैं हमला के साथ ही आपकी वीडियोस देख रहा था और हम लोग we stopped and things happened. We were doing a lot of other things as well. But you're doing everything that we wanted to do. Like this was exactly you know हमें था कि यार basic चीज़ें हैं ना, basic reviews, basic वो जो कि बंदा कहता है यार कोई rocket science नहीं है इसके अंदर. But somehow people can't do it, and the fact that you guys do it as a couple is it's amazing. Like you know, it's not an easy thing in Pakistan. You get to hear a lot of stuff. पहली चीज़ मैं आपको ये recommend करूँगा as a journalist, shut down your ears about everything that you know about Pakistan from other people. Don't listen to anyone else. Because इसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको इस तरह से देता हूँ कि इस मुल्क की आप मीडिया का सिर्फ वो देखें कि किस तरीके से evolution हुई है. 47 you have 48 you have Radio Pakistan, government controlled media. Government control again एक particular segment है जो government में बैठा है जो control कर रहा है. 67 और 57 और 58 you get PTV, again government controlled media. Television एक certain segment है control कर रहा है. अखबारात हैं प्राइवेट पे हैं, लेकिन अखबारात 2 या 3 अखबारात हैं जो कि प्राइमरली एक बहुत ही पर्टिकुलर सेगमेंट है जो कि एजुकेट होकर डिग्रियां लेकर अपने ड्राइंग रूम्स में, इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम में या लाहौर के ड्राइंग रूम में बैठ के जी तज्जिए लिखता है और वो पूरा पाकिस्तान चुप करके एक्सेप्ट करता है. 2003 में जाकर परवेज़ मुशर्रफ डीरेगुलराइज करता है मीडिया को, प्राइवेट मीडिया आता है. प्राइवेट मीडिया में तमाम अखबार नवीस जो हैं वही लोग जो कि पहले कंट्रोल करते थे वो आ जाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर और वो कंट्रोल करते हैं. और 4-5 सेट है आपका जंग ग्रुप, डॉन ग्रुप, ये वो जो कि एसेंशियली आपका मीडिया कंट्रोल कर रहा है. 2013 में इंटरनेट आया. दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी ओपनड आवर इंटरनेट एंड कनेक्टेड पीपल, टू वे कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट की है. अगर मैं पाकिस्तानी मीडिया के एवोल्यूशन की बात करूँ ना तो मीडिया का हमारा मीडिया 8 years old. It's nothing. Because the current media that you have and all these anchors and all these journalists are all they don't have any training. They're all part of the top 0.1%. They're all so entrenched in your status quo कि आप वो कुछ भी करें, वो इकोनॉमिक एनालिसिस भी जो कर रहे हैं ना, वो इकोनॉमिक एनालिसिस 3% की इकोनॉमी को बचाने के लिए कर रहे हैं. वो मैसेज की इकोनॉमी के लिए तो कर ही नहीं रहे बैठे. And the fact is that if you want to really sort of identify कि हो क्या रहा है, तो first of all you have to cut off everything that they're saying, restart, really sort of then begin to start to make sense of things based on your understanding. I'm a huge proponent of self-help and DIY. I think DIY is going to be incredibly huge in Pakistan. अगर मैं थोड़ा सा डेप्थ में चला जाऊँ as a creator to creator, right? पाकिस्तान में नीच बेस्ड क्रिएटर्स अभी तक नहीं आए हैं और वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है ऑन द मोनेटाइजेशन एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स. सो फैशन इन्फ्लुएंसर इज सेलिंग सेल फोन्स एंड you know a food blogger is selling clothes and it's a nightmare right now. And a big part of that is because people don't understand niches, and so the consumer also doesn't understand niches, but consumer is now beginning to come to a point where he's like, yeah, listen, I'm going to be very selective in the creators that I'm following, and I'm going to be selective in terms of कि यार मुझे मोबाइल खरीदना है तो मुझे वीडियो वाली सरकार से पूछना है, मुझे एसी खरीदना है तो मुझे वैसे पूछना है, मुझे ये करना है तो मुझे मुजम्मिल के पास जाना है. Because they understand कि यार last time when I trusted these guys they actually delivered, and so there is a very important requirement. जो आपने value addition की बात की, there's a very much right now we're at a brand building phase. Content industry right now is in a brand building phase. It's not in the phase of making money. It's in a phase where the millionaires of the future will be the ones who will take the risk of letting go of campaigns because they know the brand is not performing well,
or it doesn't go within the ambits of their own brand, or it actually doesn't provide value to the consumer and you're selling wrong value. People who are very incredibly careful in building that value ki relationship with their customers so that the customer begins to trust you. ठीक है. Once you have that brand, the monetization will be incredible. अच्छा, मेरा दूसरा एक वो था कि यूजुअली मैं देख रहा हूँ एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर्स हैं वो थोड़े डरते हैं इन तरह टू क्रिटिसाइज वेल एस्टैब्लिश्ड. मैंने प्रोटॉन के ऊपर एक वीडियो बनाई है. एक मेरे लिए मुझे डर भी था कि यार एक आई एम बर्निंग अ ब्रिज इन अ वे, but this is something it was the right thing to do, so I did it. So sometimes this is how I go. और सीरीन का मैंने ऊपर एक बनाया. I love the airline, it's my airline of choice, but in the end I had a bad experience, so I documented and I delivered on that. Right. ठीक है. Do you think it actually hurts if you criticize the brands that way? The biggest creator in the future will be the one who is openly critical about his experiences. Again, who is building the trust. ठीक है. This is something जो कि stems from tier 1, tier 2, tier 3. So you'll find a lot of tier 3 or your tier 3 at the age of 28. Most tier 3s are 16, 17, 18 years old, so Momina Munirs of the world. And you look at these younger kids and they're very risky. You know, they're going to say what they say and they're not going to give two shits about it. The difference here is that 18-year-old is not dealing with a large automobile conglomerate or a large airline conglomerate. They're generally dealing with a fashion brand or this or that, which is a much more sort of feedback-friendly business. But having said that, I think you will find that the biggest critics will be the ones who are the biggest money drivers in the future. Because brands do not have ethics. Ye yaad rakhiye. Brands care about the bottom line. And the person who has been critical of them will definitely be most likely to sell more of their products in the long run. ठीक है. Right? So this is actually a wrong perception कि brand इतना emotional है कि वो कहेगा कि यार इसने तो मेरी स्टोर के तरह भी भाई वो brand manager का पर्सनल ब्रांड थोड़ी है. But do you think Pakistani brands are at that maturity? Not right now. Where they would Not right now. So they would take the grudge. They would not the grudge. They will not be progressive enough to. They will probably be like कि यार I don't know अभी इसके बारे में बात नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते. But this is gonna change in the next couple of years. It's going to be the first person who is going to. So the way the industry works in Pakistan is one person tries something different, and then everybody does that for the next 2 years, right? So someone is going to take that bet of someone. इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दे भी देता हूँ. दराज ने किया था, and it's going to be these newer platforms and these newer products that are going to fuel the next wave of growth. दराज ने किया था, वो बच्चों की वीडियो आई थी और कहा था फ्रॉड है गाइस, सब फ्रॉड है. याद है वो वीडियो? नहीं. So हुंजा में एक बच्चा था, छोटा सा क्यूट सा बच्चा, उसने ना ड्रोन मंगवाया दराज से. ड्रोन जब खोला तो उसमें पत्थर था, उसने उसकी अनबॉक्सिंग रखी हुई थी. तो दो छोटे छोटे भाई बहन एक थे भाई, दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट बच्चे, ठीक है. उसके अनबॉक्सिंग कर रहे हो कि गाइस सो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ड्रोन मंगवाया और ये वो अनबॉक्सिंग करता है, उसमें पत्थर निकलता है. ठीक है. The live camera catches his reaction of this like 6,000, 7,000 rupees of him spending and drone है. And he's like fraud है. वो फेंकता है नीचे ना, वो दूसरा भाई भी उसका बेचारा परेशान हो जाता है. Fraud है guys, सब fraud है. It became a meme. So fraud है guys, सब fraud है. And the video blew up and people were like, what the hell? Daraz like and imagine Daraz, right? Like their biggest problem is these sellers faking orders, and it's a nightmare situation for them because these are these cutest kids on the planet in this mystical wadi जो कि पूरा पाकिस्तान वर्शिप करता है, sitting there and just putting your like the worst fear out in the open. What Daraz does is, week later, Daraz flies in, takes a bunch of goodies, DZSLR, top of the line drones, this or that, gives it to the kid, and he's like, they create an entire campaign around it. So a lot of these foreign funded startups actually now know कि यार criticism के साथ हमने किस तरह से डील करना है. वो एक PR का तकाज़ा है, वो कॉम्स का काम है. बिल्कुल ऐसे ही. तो वो क्राइसिस मैनेजमेंट, आज वो क्राइसिस को हम उसको बहुत पर्सनली लेते हैं. वो एक क्राइसिस मैनेजमेंट का काम है जो कि पार्ट ऑफ द सिस्टम बन जाएगा. एज द इंडस्ट्री ग्रोज एंड सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स कम इनटू प्लेस, द पीपल हु आर टू क्रिटिकल दे विल, हाँ, गवर्नमेंट्स माइट नॉट रीच आउट टू यू. If you're too critical to the government, so the government will be like, नहीं यार ये बड़ा वो. They'll get personal because it's personality led. Brands are not personality led. You need numbers and you need trust. People really need to stop worrying about the money and they need to be focusing on how do I build a community. And so you're so spot on with every aspect of
मैंने तकरीबन 18 महीने पहले, 1.5 साल पहले मैंने हमना को ये बात बोली थी, जब हमने ये TBT वगैरह स्टार्ट करने से थोड़ा सा पहले मैंने हमना को बोला था कि हमना द वर्ल्ड इज चेंजिंग फ्रॉम mass communication to community based conversations. और इसकी फलसफा मैंने इस तरह निकाला था कि I remember Mark Zuckerberg's talk 2019 की थी, उनकी F8 कॉन्फ्रेंस होती है उसके ऊपर, उसमें उसने बोला कि the way that we designed Facebook was कि it was this open space where you know everybody could, like it was like this town hall where or town square where everybody would come in and speak, right? So conventionally the way that the world was designed was you had your suburban communities and you had a town square where you would come in and someone would be screaming the war is coming and someone would be selling something and hawkers and this and that, and you'd go there, you'd spend time and then you'd come back and you'd like to talk to your people in your house and people in your neighborhood. But do you remember early days of Facebook where statuses would go viral and it was all about like just virality and going here and there? And he said we redesigned Facebook in the original architecture of the world because the world has evolved over years and years and decades to find the perfect balance. And so what Facebook did was your timeline would start to show your friends and your family more, and you would start getting notifications from your communities more, groups more, right? And so you would go बटन दबा दिया और वो एक बड़ी थॉट के साथ वो डिजाइन हुआ है पूरा का पूरा. And I realized कि आने वाले वक्तों में ये होगा कि it's not about कि आपके पास 1 million सब्सक्राइबर है, it's about आपके पास 50,000 बहुत clean, dedicated इस इंडस्ट्री में, इस niche में community है. Because trust me, like मैंने इसके already grown up की वजह से मैंने बहुत research की हुई है what you're doing right now for the local audience. आपके लिए because you understand the overseas market so well कि you know that's your comfort space. आपके पास local में तो है ही नहीं. Aviation, nobody, niche. मैंने जिस चीज पे हाथ रखा है वो किसी ने भी नहीं.